불꺼진 romantic all my life need you in an lovely day 내 눈 속에 비친 aerosol I'm feeling lonely 그 말 끝대고 말해줘요 honey 다시 crying in my room 숨기고 싶어 But still I want it more, more, more I give a second chance to Cupid 날 믿은 내가 정말 stupid 보여줄게 숨겨왔던 love isn't real Cupid is so dumb I give a second chance to Cupid Cupid is so dumb 또 손길을 걷는 everyday 눈 뜨면 다시 또 blue road Waiting around is a race 나 솔직히 지금이 편해 상상만큼 짜릿한 걸까 Now I'm so lonely 매일 꿈속에서 연습했죠 kiss me 다시 crying in my room 포기할까봐 But still I want it more, more, more I give a second chance to Cupid 날 믿은 내가 정말 stupid I'm lows. Guys, we are the back is the मैं जरा अपने लिए जरा गाने म्यूट कर देता हूँ मैं आ रहे हैं Oh shit, my bad. चलो भाई क्या है आज वो सब Partition array of maximum sum. Given an integer array, partition the array into contiguous subarray of length at most k. After partitioning, each subarray has their own change relative to the maximum subarray. Return the largest sum of the subarray partition. In test case, are generated 32-bit integer. Okay. क्या है ये? अच्छा 3 पार्टीशन मैच हो सकते हैं तो हमने ये 3 ले लिए 15 15 15 इसका मैक्सिमम सम निकाल दिया फिर क्या 10 10 10 मतलब ये 3 लिया आखिरी पे ओके फेयर इनफ ठीक है डीपी से हो जाएगा शायद डीपी है टीपी यूजिंग रिकर्जन रिटर्न कर देंगे फंक्शन जिसमें हम लेंगे इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अपना एरे जाता रहेगा और के की वैल्यू जाती रहेगी ठीक है क्या करना है हमें बना दे फंक्शन इन फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हमने लिख दिया इंडेक्स रख लिया वेक्टर ऑफ इंट ऑफ एरे घुसा दिया और इंट के डाल दिया ठीक है अरे मस्त है एकदम ठीक है रेस कंडीशन इफ रुको पहले एन निकाल देते हैं इसका इंट n इक्वल्स टू एरे डॉट साइज इसका साइज यहाँ पे भी निकाल दिया और यहाँ पे भी निकाल दिया एरे का साइज निकाल दिया बेस कंडीशन होगी इफ हमारा जो करंट इंडेक्स है वो अगर n के इक्वल है तो रिटर्न कर देंगे 0
नहीं तो क्या करना है इसमें, पार्टीशन करना है ना। पार्टीशन के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे उस वेरिएबल को, कुछ भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर हमें चाहिए मैक्स एलिमेंट निकालने के लिए ना, तो मैक्सी वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज करवा दिया इंट 1 से। अब क्या करना है, हमें मैक्सिमम सम चाहिए। तो मैक्सिमम सम के लिए हमने मैक्स सम का भी वेरिएबल बना दिया, उसको भी इनिशियलाइज करवा दिया इंट से, ठीक है। और एक हमें चाहिए नॉर्मल सम, ठीक है। वो यहाँ पे करवा दे कि बाद में, चलो वो देखते हैं बाद में। फिर लूप लगाएंगे, कहाँ से लूप लगाएंगे, जे इक्वल्स टू, कहाँ से चलेगा लूप ये हमारा, इंडेक्स से चलेगा, तो आई एन डी से चलेगा। कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा हमारा करंट इंडेक्स से, करंट इंडेक्स के जो भी हमारे के की वैल्यू होगी उससे आगे तक ना। तो या तो हमारा, हमें इसमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, या तो हमारा जो करंट इंडेक्स है वो अगर ये वाला हुआ और के की वैल्यू 3 है, तो 3 तो जा नहीं सकती, आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगी। तो इसमें हम निकाल देंगे इसका मिनिमम। तो जे चलेगा आपका मिनिमम ऑफ करंट इंडेक्स का आई एन डी प्लस के तक चलेगा, या फिर और वो करंट इंडेक्स ये हुआ, मतलब टोटल साइज का और करंट इंडेक्स प्लस के का मिनिमम निकाल देंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे जे, क्या, हाँ ठीक है। फिर हमारे पास कंडीशन आएगी सम निकालने की। तो एक भाई क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझाना है। ये देख, हमें एक एरे दे रखा है, ठीक, और उसको हमें करना है पार्टीशन डिफरेंट सब एरेज में, लेकिन कंटीजियस होना चाहिए, ठीक है। वो के की वैल्यू दे रखी होगी, के की वैल्यू 3 है, तो मतलब हमें इस एरे को पार्टीशन करना है एट मैक्स 3 एरे हो, मतलब 3 एलिमेंट हो एक सब एरे के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने ये 3 एलिमेंट का एक सब एरे बना दिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें दे रखा था कि आफ्टर पार्टीशनिंग ईच सब एरे हैज़ देयर वैल्यू चेंज टू बिकम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सब एरे। मतलब ये जो हमने सब एरे लिया, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसमें मैक्सिमम क्या है 15, तो बाकी की जो 2 वैल्यू हो जाएंगी वो भी 15-15 हो जाएंगी, ठीक है। ये देख 15-15 दे दिया, ठीक। फिर इसने पार्टीशन कैसे किया है, पहले ये 3 लिए हैं, फिर एक ये लिया है, फिर ये 3 लिए हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम सम निकालना है सब एरेस का, ठीक है। रिटर्न द लार्जेस्ट सम ऑफ द गिवन एरे आफ्टर पार्टीशनिंग। तो उसने पहले ये 3 पार्टीशन मारे, मैक्सिमम सम निकाल दिया 15, तो 15-15-15 आ गया। फिर 9 रखा, 9 का मैक्सिमम क्या है, 9 ही है। फिर ये इन 3 का सब एरे बनाया, इसमें मैक्सिमम क्या है 10, तो उसका 10-10 रख दिया और इन सबका सम निकाल दिया, सबका सम आएगा 80, ठीक है। ये किया इसने, ये है क्वेश्चन, डीबी का क्वेश्चन है, ठीक है। रिकर्सिव से फंक्शन कॉल किया इंडेक्स 0 से, और अपना ये जो पैरामीटर्स दे रखे थे भी पास कर दिए, तो साइज़ निकाल रखा है एरे का। रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, एरे का साइज़ निकाल दिया, बेस कंडीशन लिख दी कि अगर हमारा जो करंट इंडेक्स है वो एरे के साइज़ के इक्वल है तो रिटर्न कर दो 0 को। फिर हमने एक वेरिएबल लिया लेंथ 0, जो कि क्या रखेगा, हमारा एरे के पार्टीशनिंग में हेल्प करेगा। फिर एक रख दिया मैक्सी, मैक्सी क्या है हमारा, कि उस एलिमेंट के अंदर उसका मैक्सिमम क्या है, जैसे इस सब एरे के अंदर मैक्सिमम क्या है वो हमारा मैक्सी जानेगा। फिर आएगा हमारा मैक्सम, जो कि इसका सब निकालेगा, ठीक है। जितने भी हमारे पार्टीशनिंग बनेंगे उन सबका सब निकालेगा मैक्सिमम। अब फिर हम एक तीसरा वेरिएबल लेंगे सम नाम से, वो क्या करेगा, ये तो हमने मैक्सिमम सम निकालने के लिए किया, इसमें से मैक्सिमम सम आएगा इस वाले वेरिएबल के अंदर। एक हम नॉर्मल सम निकालेंगे जो हमारे जितने भी हम पार्टीशन करेंगे उन सबका सम रखेगा अपने अंदर, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तेरे को, आगे ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, मैक्सिमम निकालना है ना। तो हमने यहाँ पे लूप चला दिया करंट इंडेक्स से, ठीक है। करंट इंडेक्स से लगा दिया, कहाँ तक चलेगा, हमें के की वैल्यू दे रखी थी, तो मतलब एट मैक्स इतने तक चल सकता है। तो अगर हम इस इंडेक्स पे हैं तो इस इंडेक्स से के तक, तो मतलब 1 2 3 यहाँ तक चलेगा बस, ठीक है।
0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, तो इंडेक्स प्लस के तक चलेगा। वो लूप लगा दिया, और कहाँ तक कितना है n, तो इसका मिनिमम, जैसे समझ ले कि हम इस एलिमेंट पे हैं, तब तो इंडेक्स प्लस के तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तो इंडेक्स प्लस के करेगा तो तेरा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो इसलिए हम मिनिमम निकाल देंगे इस एरे के साइज़ का, या फिर अपने इंडेक्स प्लस के का। ठीक, चले इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं यहाँ पे। हेलो, हाँ माँ, नहीं खा लेंगे, वो अंदर बैठी हुई है। ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक है, ओके। आ गए हम वापस। तो हमने लूप चला दिया, और जैसे लूप चलाया पहली वैल्यू रख दी, हमने लेंथ इंक्रीज़ कर दी 1 से, ठीक है, लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया। फिर हमने क्या निकाला, मैक्सिमम निकाल दिया उस पार्टीशन का। तो हमने निकाल दिया मैक्सिमम क्या होगा, वो होगा हमारे मैक्सिमम ऑफ हमारा एलिमेंट, करंट एलिमेंट, और हमारा इंडेक्स क्या है, एरे ऑफ आई। ठीक है, ये निकल गया हमारा मैक्स एलिमेंट उस पर्टिकुलर उसके अंदर का, सब एरे के अंदर का। फिर हम एक ले लेंगे, जो मैंने तेरे को बोला था ना, एक सम ले लेंगे जो सारा मतलब उस एरे का सम निकाल देगा। तो हमने एरे का सम निकालने के लिए क्या किया, ये 3 का पार्टीशन था, इसको मैक्स में कन्वर्ट कर दिया एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसको हम पहले मैक्स में कन्वर्ट कर देंगे। मैक्स में कन्वर्ट हो, ये लाइन है लेन इंटू मैक्सी, इससे क्या हुआ, इन 3 के सम, मतलब इस एलिमेंट को पहले हमने मैक्स बना दिया यहाँ पे, तो मैक्स बन गया, और फिर इस सब एरे का सम उठा लिया हमने, एल इंटू एम प्लस रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया अगले इंडेक्स के लिए। तो अगला इंडेक्स क्या है, j+1 कॉमा एरे कॉमा के, ये रिकर्सिव फंक्शन दूसरा कॉल हो गया। फिर हमने इन सब का सम ले लिया, तो मैक्सम इक्वल्स टू मैक्सिमम किसका, मैक्सम का और सम का। ये हमारा मैक्सम हो गया, और आखिर में कुछ नहीं किया, हमने रिटर्न कर दिया अपने मैक्सम को। सही किया, सही किया। रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, लेंथ बनाई, वेरिएबल को ठीक है इंटरमीडिएट से इनिशियलाइज करवा दिया, करंट इंडेक्स लूप चला दिया मिनिमम ऑफ इंडेक्स प्लस के तक। ठीक है, j प्लस प्लस कर दिया, लेंथ इंक्रीज कर दी, मैक्सिमम एलिमेंट निकाल दिया, तो उस मैक्सिमम एलिमेंट का हमने, ठीक है, ये करके रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, मैक्सिमम सम का मैक्स निकाल दिया, और सम सही है, चल देना चाहिए। ये क्या है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल आई, अबे यहाँ पे आएगा जे, क्योंकि लूप तो हमने जैसे चलाया था ना भाई। हो गया। अब डीपी का क्वेश्चन है, डीपी यूज़ नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारी टाइम टीएलई एरर जाएगा। तो टीएलई एरर हटाने के लिए हम इसमें यूज़ कर देंगे वेक्टर ऑफ इंट डीपी साइज एन इनिशियलाइज कर दिया आई से, यहाँ पे डीपी पास कर दी, यहाँ पे डीपी पास कर दी, यहाँ पे डीपी इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे डीपी डाल दिया, बेस कंडीशन डाल दिया, इफ़ डीपी ऑफ आई एन डी अगर प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई एन डी। ठीक है, डीपी ऑफ आई एन डी रिटर्न कर दी, और लास्ट में यहाँ पे डीपी ऑफ आई एन डी को डाल दिया। क्या चलेगा, चलिए सबमिट किया, वेरी गुड, ये हो गया। अब फिर आपको मैसेज मार देंगे, डे 3 है ना आज, ठीक है, डे 3 readme.txt
file, Control C, b.cpp, चलो भाई ये भी हो गया। अब हम आते हैं पढ़ाई के लिए। AVL ट्री पढ़ना था नाम है, ठीक है। स्क्रीन ये बैलेंस ट्री है। The above tree is able to show difference between the height of the left subtree and right subtree are less than equals to 1. Example of tree that is not an AVL tree. Not a AVL tree because the height of left subtree and right subtree is greater are 8 or 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Five removable VST operation is maximum accelerated lowest time complexity overrides the higher output. The cost of these operations may become worse than capacity when the tree is broken after every part of the evil tree works out. Insertion in an evil tree. Evil tree बड़ा था ना हमने। हमारा सिंपल ट्री जिसमें हमने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर बनाया था। ये हमारा सेल्फ बैलेंसिंग ट्री which is also known as AVL tree. ट्री बनाया, कॉल किया चेक करने के लिए कि क्या ये बैलेंस ट्री है कि नहीं। कंडीशन अगर रूट ना ले तो रिटर्न कर दो ट्रू को हाँ बैलेंस्ड है, वरना फिर रूट के लेफ्ट को कॉल कर दो। रूट का लेफ्ट
तो वीडियो देखनी पड़ेगी भाई। दूसरा बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, सेम यार आपको बाइनरी ट्री समझ आ गया था भाई कि यार या तो 0 चाइल्ड होंगे या 1 चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होंगे, ये बाइनरी ट्री होता था। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होगी, इसी प्रकार की प्रक्रिया पर बेस्ड एक ट्री। क्या मतलब है कि एक आपकी यार रूट नोड हो गई, ये मेरी रूट नोड हो गई, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो हमने बेसिकली क्या बोला, रूट का डेटा यहाँ पे छोटा हो जाएगा और जो यहाँ पे नोड्स का डेटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस प्रकार का मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये ट्री होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार, तो इसको फटाफट बनाते हैं ताकि आपको मैं और क्लैरिटी दे पाऊँ, मैं किस प्रकार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और दिनों बाद आए यार, देख लिया होता 10 दिन का, अच्छे से शांति, दिमाग की शांति करा के आए बिल्कुल। हर बार लेफ्ट सब ट्री में डेटा और उस रूट नोड से छोटा होगा और हर बार राइट, ये हो गया 7, ये हो गया डलेगा 10 के 15 के केस में राइट सब ट्री में सब कुछ बड़ा होना चाहिए, 17 16 19 सब कुछ बड़ा है। 17 के केस में लेफ्ट में छोटा होना चाहिए, ठीक है, 16 छोटा है। 17 के केस में राइट में बड़ा होना चाहिए, 19 है। तो इस प्रकार हमने क्या बोला, एक ऐसा ट्री जहां पर ये प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करा पा रहे हो, क्या समझ में? उसी प्रकार मैंने सेम चीज बोली, हर नोड के राइट सब ट्री के अंदर बहुत सब कुछ छोटा होना चाहिए, 4 छोटा है, 6 4 7 आ गया, लेट्स से, फिर लेट्स से 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। इस केस में क्या बीएसटी बनेगा, मैंने कहा ठीक है, अगर इस प्रकार एक स्ट्रीम मेरे पास आ रही है तो बना देता ना एक बार बीएसटी। सबसे पहले 10 आया तो मैंने एक नोड बना दी 10 नाम की, चलो अभी सबसे बड़ी नोड आई, इसका नाम है रूट नोड रख दिया। फिर मेरे पास 8 आया, 8 जो 10 से छोटा, 8 से भी छोटा है, इसके भी लेफ्ट पार्ट में जाएगा, छोटा है पूरा। फिर लेफ्ट पार्ट में जाता हूँ, फिर 7 से कंपेयर किया, छोटा है, कर्जन महाराज सब कुछ कर देंगे, हमें सिर्फ इतना लॉजिक पता होना चाहिए, बहुत ठीक है भैया। कैसे करना है समझ में नहीं आया, मैंने कोड करता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। तो क्लास में इसका नाम लिख दिया नोड, क्लास नोड। और हमें ट्री की नोड में क्या क्या चाहिए होता है, एक तो डेटा, एक लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर। तो मैं पढ़िए एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, बेस का डेटा राइट, स्टार्टिंग में ये नल है। हमने बोला एक फंक्शन बनाओ टेक इनपुट नाम का, हमने बनाया एक फंक्शन टेक इनपुट नाम का जो कि इनपुट लेगा और ट्री बिल्ड करेगा। यहाँ पे मैंने बोला सी आउट इंटू डेटा टू क्रिएट बीएसटी, उसी प्रकार मैंने फंक्शन बना दिया फटाफट, टेक इनपुट। यहाँ पे मैंने सिंपल बोल दिया कि ब्रो, यहाँ मैंने बोल दिया कि यार आपने क्या करना है, एक डेटा वेरिएबल बना दिया, इसको आप इनपुट कराते जा रहे हो, सी इन डेटा, ठीक है। और जब तक आप -1 नहीं डालोगे मैं इनपुट लेता रहूँगा, जब तक आप -1 नहीं डालोगे तब तक मैं इनपुट लेता रहूँगा। वाइल इट इज नॉट इक्वल टू -1 हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इस डेटा को इन बीएसटी में डालते हो, इंसर्ट इनटू बीएसटी, इस प्रकार। तो बीएसटी में क्या डालना है, रूट में डालना है, आपको क्या डालना है, रूट में आपको डेटा डालना है, ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे आप हर बार एक डेटा लेते रहोगे, ठीक है। इतना आपने कर दिया, डन है। यहाँ मैंने पास कर दिया आपका, लेट से रूट पास कर दिया, नोट स्टार एंड रूट बाय रेफरेंस, और यहाँ हमने रूट पास कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, ये इंसर्ट इनटू बीएसटी वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। चलो मैंने बोला वॉइड इंसर्ट इनटू बीएसटी, क्या है इसके अंदर, इसके अंदर तो मेरी नोट स्टार आई है, नोट स्टार एंड रूट, और मेरा डेटा आया, समझ में आ गई। अब मुझे बीएसटी में इंसर्ट कैसे करना है, मैंने बोला सिंपल है ना दोस्त, सिंपल है। मैंने क्या बोला था, अगर आपका जो डेटा पुट करना है वो रूट के डेटा से बड़ा है तो राइट पार्ट में डालना, अगर छोटा है तो लेफ्ट पार्ट में डालना। और एक तो मेरा बेस केस होगा, लगाने वाला ना, बेस केस होगा। बेस केस क्या होगा कि अगर आपकी जो रूट नोड है वो नल है, मान लो अगर नल है तो क्या करो, नोड क्रिएट करो, रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, या आपने न्यू नोड क्रिएट कर ली और आपने टर्न कर दी रूट, है ना। क्या केस था यहाँ पे, ये केस था कि स्टार्टिंग में जो रूट थी ना वो आपकी नल के इक्वल थी, यानी कोई ट्री था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, नल के इक्वल है, पहला डेटा आया 10 आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक नोड बना दो, उसमें 10 डाल दो, उसको रूट बोल देना, सिंपल, इतना कर दिया, इतना करके वापस भेज दिया। अच्छा ये केस था हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको कर दिया है, रिटर्न नहीं कर सकते हैं हम रूट को क्योंकि हमने वॉइड टाइप का फंक्शन बनाया, बढ़िया। यहाँ पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पे इशू इस प्रकार है कि कह रहा है कि आप इंसर्ट कुछ नहीं करने हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, तो नोट सामने रिटर्न कर दिया, फिर बाहर में देखने की जरूरत नहीं, हमने इसको लिख दिया रूट, है ना। तो इस पर हमने इंसर्ट कर लिया। अब मैंने क्या बोला कि जो भी मेरा डेटा है, इफ जो मेरा डेटा है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, रूट के डेटा से। अगर जो भी मैं पास कर रहा हूँ, जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वो रूट के डेटा से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या, राइट पार्ट में जाना है, राइट पार्ट में इंसर्ट करना है, ठीक है। राइट पार्ट में इंसर्ट करना है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ कि रूट का राइट इज इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू बीएसटी, और यहाँ पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ राइट सब ट्री के अंदर, किसको, इस डेटा को, खत्म। एल्स केस क्या हुआ, एल्स केस क्या हुआ कि यार लेफ्ट पार्ट में इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या बोला, रूट का जो लेफ्ट है ना यार उसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट इनटू बीएसटी
ठीक है। तो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया और मैंने अपना रूट रिटर्न कर दिया बाद में, खत्म। ध्यान समझे कुछ इसको कोड को दोबारा। तो मैंने बेसिकली क्या बोला कि पहला केस तो हुआ जब आपका स्टार्टिंग में रूट नल पड़ा हुआ था, आपकी पहली वैल्यू आई थी 10 आया था स्टार्टिंग के अंदर, तो आपने क्या किया था, इस 10 के लिए आपने एक नोड बनाई थी ना, ऐसे करके उसका आपने रूट बोल दिया था, तो मेरा बेस केस हो गया कि जब रूट नल थी तो नोड बना दिया आपने और उसको रिटर्न करा, डन है। फिर मैंने क्या बोला, जो भी मेरा डेटा आता है उसको मैं कंपेयर कराते रहता हूँ, है ना। अगर तो वो डेटा छोटा है तो लेफ्ट पार्ट में आ जाऊंगा, अगर वो बड़ा है तो राइट पार्ट में आ जाऊंगा। तो वही है, अगर वो डेटा बड़ा है तो राइट पार्ट में इंसर्ट कर दिया, छोटा है तो लेफ्ट पार्ट में इंसर्ट कर दिया, डन। इस प्रकार मैंने इंसर्शन का कोड लिख लिया, ठीक है। तो एक बार फटाफट से चला के देखते हैं चीज़ चल भी रही है कि नहीं। मैंने इसको रन कर दिया, कहता है कि इंसर्ट एंटर डेटा टू क्रिएट बीएसटी। मैंने बोला कि 10 स्पेस 5 स्पेस 21 स्पेस -1 हो गया, डन हो गया क्रिएट। बट दिख नहीं रहा ना, तो उसके लिए हमको यहाँ पे ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। तो कुछ थोड़ा ऑलरेडी हम पहले लिख चुके थे, बाइनरी ट्री में पढ़ने बैठे थे, हमने लेवल ऑफ ट्रैवर्सल के बारे में सीखा था ना वहाँ पे। तो फटाफट से लेवल ऑफ ट्रैवर्सल कोड लेके आ जाते हैं उठा के फटाफट। हमने क्या बोला, लेवल ऑफ ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, कॉपी करने को यार। हमने लेवल ऑफ ट्रैवर्सल कॉपी कर दिया, ठीक है, इसको हमने कॉपी कर दिया, डन है। तो मैंने यहाँ पर ये कोड को कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, डन है। अब मैंने क्या बोला कि अच्छा कहाँ पर इशू आ रहा है, उसने बोला नोड स्टार, नोड की स्पेलिंग एन बड़ा रखा हुआ है पुराने कोड के अंदर, चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। क्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, C++ है, डन है, डन है, डन है, सही है। हमने क्या बोला, चलो प्रिंट करा दोगे। हमने बोला लेवल और ट्रैवर्सल, इसको क्या पास करना है, रूट, डन है। हमने बोला इसको प्रिंट करने से पहले प्रिंटिंग द BST, डन। इसको रन कर दिया एक बार। तो जो हमने बनाया था वो था 10 स्पेस 8 स्पेस 21 स्पेस 7 स्पेस 27 स्पेस 5 स्पेस 4 स्पेस 3, और हमने बोला कि वाइल डेटा नॉट माइनस तब तक चलते जाओ यहाँ पे, राइट। तो माइनस से हम इसको एंटर कर देंगे, एंटर कर दिया। तो पहले लेवल पे है 10, फिर है 8 और 21 बिल्कुल सही, फिर है 7 और 27 बिल्कुल सही, फिर है 5, फिर है 4, फिर है 3। तो बहुत प्यारा ट्री बनाया हमने, ठीक है। तो आज के टाइम पे हमसे पूछे BST क्रिएट करना आता है दोस्त, तुझे नंबर एक नंबर की स्ट्रीम दूंगा, आप बोलोगे हाँ आता है, कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल होता है। अगर रूट नल है यानी कि बेस केस, तो मैंने वो नोड बना के वापस भेज दी। अगर नहीं है तो आपने जस्ट कंपेयर कर लिया, जो भी डेटा आपके पास है उसको रूट डेटा के साथ। अगर वो डेटा जो आपने पास किया है यानी डी की बात कर रहा हूँ, वो बड़ा है तो राइट पार्ट में इंसर्ट करना है, तो राइट पार्ट के लिए कॉल करना, छोटा है तो लेफ्ट पार्ट में इंसर्ट, कहाँ गया, ठीक है। ठीक है, तो हमने फटाफट यहाँ पे कोड लेके आ जाता हूँ मैं। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ना पड़ेगा साला। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, हाय ड्राइवर भैया जिंदाबाद। So before starting this video, I'd love to thank Reliable for sponsoring this entire tree series. So do you wish to work with companies like Red, Upgrad, Urban Company, Razorpay, but you are not able to apply because of your lack of experience and of lack of opportunities? So here's a solution to this problem. Reliable by Unacademy is a hiring platform that helps freshers and experienced people to get jobs in India's top companies. All you need is skills. So what you need to do is you just need to give the Reliable test that is completely based on your skills. Depending on your performance, your interview will be scheduled and you will be hired from the Reliable platform. And the best thing about this is it's absolutely free. So what are you waiting for? Please make sure you check out the links in the description. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So today we will be discussing the level order traversal, which is another episode from the Free Cut Tree series. So what is a level order traversal? So this is the binary tree that you are seeing over here, right? So if I talk about level, this is the first level, right? So if I write down 1, then if I write down the next level from left to right, if I write it down, it'll be 2, 3. Again, if I write down for the third level, first it's going to be 4, then it's going to be 5, then it's going to be 6, then it is going to be 7. So this is what a level order traversal will be. It's going to traverse in this fashion, then in this fashion, then in this fashion. So you have to print the level order traversal of any given binary tree. So in order to print the level order traversal in level wise, what we require initially is a queue data structure. Okay, so let's define a queue data structure. Now this queue will be initially having the root of the tree, that's 1. Now in order to store the traversal level wise, we will be requiring एक सेकंड एविलिटी का कॉइन चेंज प्रॉब्लम हमने कल कर ली थी, हीप सॉर्ट करना है। एक ये कर देते हैं, ब्रेवर बना देते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं। और क्या है,
graph blurring problem. Yeah, I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel to the 80, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Oh, उस ड्राइवर का है बस ठीक है. Shortest pathing graph. If you didn't know the implementation, just judging theory. Crystal Prince theory. ठीक है. Shortest pathing. Extras भी है. Insertion and deletion in VST. You have to write the code. ठीक है. All views on binary search tree. All views मतलब you know knapsack whatever. Fibonacci without recursion, factorial without recursion, mass contiguous array sum, merge quicksort, insertion sort, pattern printing, and number sieve. Reversal array, reversal string, vowel sorting, reverse array. Fibonacci vector of Hermes sum. ठीक है. In some data structure. So let's take a vector of vector or an array list of array list for that reason. So I'm going to take a vector of vector which stores the level wise traversal level wise. Now these are the initial data structures that I'll be taking. Okay, now let's start iterating over this queue. So what's the first thing that I have? I have a node which is 1. So let's take this one out. Okay, so I've taken this one out. Now whenever you take this one out, please make sure that if on the left of this one, that's 2, if it exists, if the left exists, just take this left guy and put it into your queue data structure. Okay, now check the right side of 1. Just check the right side of 1. Does the right side exist? If it does exist, take this and put it into your queue data structure. Once you have done it for... Wait a second, hold on. Into all of access. मैंने इसमें क्या रखा हूँ
Chalo. For Continue. one. Okay, once you've done it for one, since there was only one guy of this level, right? What you will do is you will take this one, put it into a vector or a list, and you'll put it into your data structure which stores your traversals. So I put that. So this traversal is completed. Now in the next traversal or in the next iteration of the queue, what you will do is whatever are lined up in your queue, just take them. Whatever is lined up in your queue, just take them. You don't need to do anything extra. Just take them whatever is lined up. Now off 2, check the left, that's a 4. On 2, check the right, that's a 5. So first 4, then 5, insert that into your queue data structure. Similarly, do it for 3. For 3, on the left, there is a 6. On the right, there is a 7. So let's take 6, let's take 7, and insert into a queue data structure. Once on this iteration, you have done for 2 and 3. Again, put it into a list or a vector, and just make sure you put it into your data structure, which is storing your level-wise traversals. So you'll put 2 and 3 as of now. Perfect. And the next iteration, you have these 4 elements. That's your next iteration, right? You have these 4 elements. So what you will do as of now is, you'll take these guys out, 4, 5, 6, 7. So 4 is taken, 5 is taken, 6 is taken, 7 is taken. Does 4 have a left? No. Does 4 have a right? No. Does 5 have a left? No. Does 5 have a right? No. Does 6 have a left? No. So similarly, no one has a left or a right. So if it doesn't have, you don't need to push anything into the queue. Now take these 4 guys out, put it into a vector, and put this into your required answer data structure, which is 4, 5, 6, and 7. So once this is done, you can say your traversal is completed, and if you carefully observe, your queue data structure is indeed empty now. Whenever this is empty, you can say this data structure stores your level order traversal. So this is how you're going to store the level order traversal. So I hope you have understood how to do a level order traversal on any given binary tree, right? Now let's quickly check out the code. So guys, I'm going to discuss the C++ as well as the Java code. So on the left side, you can see the C++ code. On the right side, you can see the Java code. So initially, you can see that you're given the root of the binary tree, right? So what you can see is, initially I've declared the data structure which is going to store the list or the level-wise traversals. Right after that, I see if the tree that is given to us, if that is empty, I'm going to return an empty data structure saying that I don't have any level-wise traversals. After that, I have defined a queue data structure, right? That's the line. I'm saying queue.push root. So this is the moment when I make sure that I have all the initial configs ready. Right after that, I just make sure that I take the size. So whatever is the number of elements, for the first time I will have 1. I don't have any level-wise traversals. After that, I have defined a queue data structure, right? That's the line. I'm saying queue.push root. So this is the moment when I make sure that I have all the initial configs ready. Right after that, I just make sure that I take the size. So whatever is the number of elements, for the first time I will have 1, for the next time I will have 2, 3, for the next time I will definitely have 4, 5, 6, 7, 4 elements. So I take the size of the element, and whatever is the size, I basically traverse for that. So that means I'll traverse for 2, 3, and the next time I'll traverse for 4, 5, 6, 7. So this traversal is done using this for loop, okay? Right after that, what I'm doing is I'm taking the node. That means I'm just taking 2, 3, or 4, 5, 6, 7. Like this is the first iteration, this is the second iteration, this is the third iteration. Across, I'm taking every node. So what am I doing is I'm taking that node and I'm popping it out, and whatever node I'm taking, if there exists a left, I'm pushing it into the queue. If there exists a right, I'm pushing it into the queue, right? And once it is done, I'm storing that node, I'm storing that node into some vector. So once the complete iteration is completed, I'll take this vector level and I'll put it into my answer. Got it? So this is how, after the entire iteration, I can say, this data structure, which is answer, will be storing the entire level-wise traversal, and I can easily return it. So guys, this is how the level-wise traversal will look like. And so guys, if I
एक्चुअली ले रखे हैं, एक क्यू ले रखा है और एक वेक्टर ऑफ वेक्टर ले रखा है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर है। ठीक, क्यू ले लिया, क्यू में रूट डाल दिया। रूट कैसे हमारा बनता है, तो क्यू में रूट डाल दिया, उसका क्यू का साइज निकाला, एक लेवल निकाल ली जो कि हमारे चलेगी साइज तक। फ्रंट नोड इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट। फ्रंट निकालेगा क्या? Next time I will definitely have 4, 5, 6, 7, 4 elements. So I take the size of the element, and whatever is the size, I basically traverse for that. So that means I'll traverse for 2, 3, and the next time I'll traverse for 4, 5, 6, 7. So this traversal is done using this for loop. Okay. Right after that, what I'm doing is I'm taking the node. That means I'm just taking 2, 3, or 4, 5, 6, 7. Like this is the first iteration. This is the second iteration. This is the third iteration. Across, I'm taking every node. So what am I doing is I'm taking that node and I'm popping it out. And अच्छा, नोड लेके पॉप किया है। ओके okay, okay, I got it, I think so. इन ऑर्डर कर रखे हैं अभी तो इन ऑर्डर है ना, लेवल ऑर्डर करना है ना मुझे। क्या लेवल ऑर्डर करना है? लेवल ऑर्डर नहीं कर रखा था। हेलो लिमाई, हाउ आर यू? level that means 3 9 20 3 9 20 what's up man, what's up? My mic on and on. Let's take a vector which will store our result. Check for the condition f2 equals null, will return null res. That's right. Which is the queue, right? Yeah. Everything's finished. Okay, now let's go with the loop. Okay, we have to go here root first. Okay. We have to push the root into the queue. Then we have to check if
RQ is not empty. If it's not, we'll create a temp variable. We'll find the size of the queue first. Let's go. Is it? Where? What? Size, yeah. Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think We found the size of the array. Okay. We'll find the level of the array. that bullets will bring back desire. You put in it. Looks like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. And the level. Parent I equals to 0 less than size.
data structure. Check if the queue is empty. Oh, who's the rating the queue? Create a vector to store the elements in order, and the size of queue. Take the first element and pop it from queue and insert it into TS. Previous level written also. बस रूट कर रहा है नोट का चल रहा है ना ले uh, 18th line. You got to shoot. No. Have it again. Something wrong. Why is it giving a wrong answer? Okay. Let's see. We created a vector res. Okay, if root is null. Okay, we created a queue. Let's go. We push the root. Okay. Oh, while it's while loop, bro. If the queue is not empty, we'll find the size. Create a vector to store. Okay. Let's go. Let's see. Delete this shit and copy this shit. Okay. Create a vector, create a queue, create node, node,
name it Q. Okay. We'll push the root into the Q. Okay, now let's check while our queue is empty. Well, the queue is not empty. Sorry, my bad. Let's create a vector which will store the level wise and the size and the queue size. Okay, now look, int I equals to 0, I less than size I plus plus. Okay, q dot front we'll create a new node, I guess. I think so. Should we create a new node? I think so. We have to create a new node. The node, let's name it node. Okay. Now we have created a node. Now we have to just check if our node left subtree is not equals to null. We'll just simply push it to check for the right subtree. If node right is not equals to null, we dot push node right. That's all, I guess. Yep. Now we'll push our answer into the level, then we'll push the level into a result and then return the result. So like yep, that will be all. Compilation error q dot front. Oh, my bad. Runtime error. Why is there a runtime error? Have I done something wrong? Have I done something wrong? If node that left is not equal to null, everything looks good. What's the problem now? Let's start seeing. If created a vector, if root not equals to null, bro, where is the base condition? Bro, did we forgot to write the base condition? If root equals null, return base. Bro,
अरे जेसन भाई क्या हाल है? How many questions to crack, Mang? Mang, ब्रदर पहले तुम TCS क्रैक करो, फिर मैंग पे आते हैं। पहले TCS पे आओ, TCS के बाद तुम इन्फी निकालो, इन्फी के बाद आना फिर मेटा, अमेजोन, एडोब, गूगल पे। TCS का 3 घंटे का पेपर होता है मेरे भाई, 5 सेक्शन होते हैं। अभी इंडिया का जो करंटली टफेस्ट पेपर चल रहा है कोडिंग का, वो इन्फी का चल रहा है। क्या मतलब TCS हायर ही नहीं कर रही? भाई मेरे बैचेस का तो अभी भी हायरिंग चल रही है भाई, मेरे साथ वाले तो दे रहे हैं TCS के पेपर। मैं 24। भाई 24 का तो और अच्छा हाल है भाई, इतने सारी कंपनियां अभी वो आ रही है ना, क्या बोलते हैं, जिनको 2024 के ग्रेजुएट चाहिए। दिखाऊं तेरे को, रुक एक सेकंड, इसमें नहीं होगा, वेट। अभी अभी मैंने एक कंपनी में भरा था, उसने पता मुझे रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि मैं 2024 का ग्रेजुएट नहीं था। ये देख, मैनेजमेंट इंटर्न पुणे बेंगलोर KPID टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब प्रोफाइल ओपन फॉर, कहाँ गया साला? किसका देखा था मैंने, इसका देखा था क्या? यही था शायद। ये कौन सा था? 2024 मांग रही थी वो। ये देख, कौन सी है ये? हेक्सावेयर, ठीक है। कितना दे रही है ये? 6 दे रही है। अलाउड बैचेस, जॉब प्रोफाइल नॉट ओपन फॉर बैचेस 2023 पास आउट। अलाउड बैचेस कौन से है? 2024 पास आउट के, ठीक है। भाई 2024 के बहुत आ रहे हैं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा। तो सबसे बढ़िया है TCS निकालो पहले, क्योंकि TCS निकालोगे 3 घंटे का पेपर दोगे, उसमें पास होगे, फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा ऑन कैंपस। ऑन कैंपस इंटरव्यू होगा, अगर तुम सेलेक्ट हो गए बाई चांस, ठीक है, तुमने HR वेचआर सब क्लियर, और उनका HR और मैनेजेरियल राउंड बहुत खतरनाक होता है। उनके मैनेजेरियल अगर तुमने पास आउट कर लिया, फिर मेरा एक दोस्त था, तो उसका TCS में हो रखा था भाई, वो हर हफ्ते कभी दिल्ली, कभी देहरादून, कभी आपका पौंटा साहिब सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था। ऑन कैंपस नहीं हायर कर रही TCS, ऑन कैंपस हायर नहीं कर रही कि तेरे कॉलेज में नहीं आ रही। बोथ केसेस भाई, क्योंकि TCS तो ऐसी कंपनी है जिसने अभी स्टेटमेंट दिया था प्रेस में आके कि हम बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे और जितना हो सकता है हम उतना हायर करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो रोकेगी अपने कैंपस प्लेसमेंट।
बस 3 LPA में 3 साल बॉन्ड ओनली। भाई 3 LPA क्या बात कर रहा है यार, TCS हमारे में 7.5 पे आ रखी थी, 4 पे आ रखी थी, 5.5 पे आ रखी थी और 7.5 पे आ रखी थी। नॉट TCS, अदर कंपनीज। हाँ भाई देख, बॉन्ड का सिस्टम 3 LPA में बहुत ख़राब है। अभी मेरा एक दोस्त था, क्लमजी, तो जानता ही होगा क्लमजी को। उसका कितना था, उसका 8 था, ठीक है, लेकिन उसका 3 साल का बॉन्ड है 8 LPA पे। अब वो फरवरी में नहीं, जनवरी या फरवरी से लेके उसको दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने उसको काम ही करवाते रहे भाई। परमानेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, काम ही करवाते रहे उसे। और अभी मेरी उससे बात नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं वो परमानेंट है कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे उसका। उसकी कंपनी एक्वालाइट थी भाई। बैंडिक, इसका कोड जो था, इसका मेन मेथड लिखते हैं हम तो। जीपीटी का यूज़ करेंगे हम, चैट जीपीटी का। Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. तो ये कॉल करना होता है, ओके। एक ये हमारे भैया हैं, कहाँ हैं हमारे भैया, ये वाले भैया, हाँ है ये पड़ा हुआ, ठीक है। कितना वेट करोगे भाई टीम? इस हरामी से जिम नहीं आया जा रहा, ठीक है, क्यों नहीं आया जा रहा, तबीयत खराब हो रही है। 12-12 घंटे लगातार स्ट्रीम कर रहा है ये। हाँ मीमर बोल रहे, हमेशा मैसेज करता हूँ उसको मैं जाने से पहले कि आजा आजा आजा। कभी मम्मी ने मना कर दिया, कभी तबीयत खराब हो रही है, और गेम खेलने में कोई तबीयत तो नहीं खराब हो रही है भाई। अब क्या ही बोलूँ भाई। और वहाँ पे जिम वाला मेरे से पूछ रहा कहाँ है वो, आ क्यों नहीं रहा 3 दिन से। मैं उसको बोला तबीयत खराब है, तबीयत खराब। बोला ऐसे क्या तबीयत खराब हो रही है भाई उसकी। मैंने कहा बुखार सा लग रहा है, बोल रहा था। बोला बहाने बहाने। विचर 3 तो नहीं खेला जा रहा, बीमारी का बहाना दे रहे। अरे लोंगडू है भाई। So before starting of this video, I'd love to thank Reliable for sponsoring this going Travis. That's it. And the next station when you come back, भाई ये बंदा you're बेस्ट है taking, भाई, you're given the root of the tree. ये बंदा बेस्ट है भाई। प्री ऑर्डर तो निकाल रखा है मैंने, हाँ प्री ऑर्डर वगैरह। पैसा दे दिया था, क्या दिक्कत। उफ। और कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं अभी, कहाँ गया। ये हो गया, 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 ये हो गया। हीप शॉट, ये बचा है, 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 ये बचा है। गूगल छोड़ दिया वैसे ड्राइवर। कहाँ छोड़ भाई, नहीं छोड़ा उसने, तुम बेवकूफ़ हो, आधी चीज़ें पता है तुम्हें। उसने गूगल वॉर्सो छोड़ा है भाई। उसने इंटरनल ट्रांसफ़र लेके वो गूगल इंडिया आ गया है बैंगलोर। होशियार, कोरमंगला में है वो, गूगल इंडिया के ऑफिस में। क्या यार जेसन यार, तू भी
बिजी रहता है, इतना नहीं देखा वीडियो। ओम फो वेरी बिजी। किस चीज़ में बिजी है वैसे तो? रात में तो गेम खेलते रहता। ओह सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, ओके। हे कल ही तो सेम ओवर हुए। मैं नहीं, वो मेरी आईडी से खेलता कोई। ओके ओके। कौन से सेमेस्टर में है तू? 7वें में आ गया होगा। आराध्य राजवंशी फॉलोज यू एंड इनवाइटिंग यू टू एक्सेप्ट। अब 8 में जाऊंगा। ओ माय गॉड, लास्ट ईयर। प्लेसमेंट लो भाई, रिसेशन चल रहा है, जो मिल रहा है ले लो। कुछ नहीं मिलेगा वरना बाद में फिर किसी को बोल के रेफरल देना पड़ेगा। नो हिट। 4.3 का है एक, नो बॉन्ड। अरे बट तो चिल है बैंक। भाई 4.5 की नौकरी कर 1 साल, 4.5 का 6.5 हो जाएगा वो, ठीक है। मेरा एक दोस्त था 4 पे गया था वो, इतने 6 महीने हुए उसको, उसका 4 से 6 हो गया है। अभी फिर इंक्रीमेंट होगा उसका, और बोनस अलग से मिलता है साले को, ठीक है। वैसे कौन सी कंपनी है? रेफरल का तो जुगाड़ हो जाएगा पर हायरिंग ही नहीं हो रही। सारे रेफरल कभी जेनपैक्ट में है। जेनपैक्ट ने तो अभी हमारे रुक जा, लिंक्डइन खोलूँ क्या? तेरे को डिप्रेस कर दूँ क्या मैं? रुक जा, तेरे को डिप्रेशन में लाता हूँ थोड़ा सा। कल ही मैंने पोस्ट पढ़ा था एक बंदे का। ट्वीट नहीं दिखता क्या इसके? ट्वीट बोल रहा हूँ, कल ही पढ़ा था मैंने। पता है, एक थी लड़की, उसने इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ था कि जेनपैक्ट ने नवंबर 2022 में ऑफ़र लेटर दे दिया, ठीक है। और उनको बोला तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी कब? मार्च में, मार्च 2023 में। फिर मार्च 2023 से कोई बात नहीं की, कोई उनका रिस्पांस नहीं आया। फिर एक दिन उनको मेल आया कि आपकी ट्रेनिंग पोस्टपोन हो चुकी है, मार्च 2023 से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी अब अगस्त 2023 में। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त आ गया, ठीक है। अगस्त में उन्होंने बोला कि आपकी ट्रेनिंग अगस्त में नहीं हो रही है, जनवरी 2024 में होगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो और रुके। जनवरी 2024 हो गया, जनवरी ख़त्म हो गया, अभी तक उनका कोई मेल नहीं आ रखा है, ना उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रखी है। तो अब तू देख ले। जनपैक्ट का ही, जनपैक्ट के बारे में लिखा था उसने। अरे मच्छर भाई कैसे हो? पटाटर भाई कैन यू डू 13 आवर स्ट्रीम? मच्छर भाई मैंने आपको बताया तो था, मैं 10 बजे उठता हूँ, अगर 11 साढ़े 11 तक भी स्ट्रीम शुरू करूँगा। 2 बजे मुझे अपनी बहन को लेने जाना होता है, ठीक है। उसके बाद 4:45 बजे का मेरा जिम होता है, ठीक है।
तेरा RDS और प्रो में फ़र्क होता है। और आपके कॉलेज में 23 के बैच की एक बंदी की तो हुई है ज्वाइनिंग। भाई किस्मत के ऊपर है जेसन भाई, किस्मत के ऊपर, टोटल किस्मत। अभी तुझे क्या लगता है मैं क्यों बैठा हुआ हूँ? मेरे बैच की ऑनबोर्डिंग नहीं आई होगी? मेरे बैच की ऑनबोर्डिंग आई है, मेरे कॉलेज के बच्चे भी गए हैं, मेरी क्लास के तक बच्चे गए हैं, लेकिन मैं नहीं गया, मेरे पास आई नहीं अभी तक। और अभी अभी तो रुक भयंकर, कल रात को मेरे पास कॉग्निजेंट का भी आ गया कम्युनिकेशन राउंड, पता है क्या मतलब? लूसी की बात हो रही है? नहीं नहीं, लूसी तो कैब जी में था ना, उनको तो पहले बुला लिया था, उनको 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 बुलाया था, उनको आई गेस नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में बुला लिया था उन्हें, लूसी को तो। मैं LTI माइंड में था ना, मेरे साथ के थे .NET बैच के ही। लूसी तो मज़ा कर रहा है भाई, पता नहीं हमारा किस्मत में खोल। अब या तो मेरी किस्मत मुझे बोल रही है कि कोई बात नहीं, तू वेट कर ले, तूने इन्फी का पेपर दिया, इन्फी का क्लियर हुआ, अब इंटरव्यू देने जा, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया ना भयंकर तो उफ, मज़ा आ जाएगा भाई। वन 89 9 11 इन ऑटो मार रहा है तो अच्छा, 76। वो तो डिनायर की भी किस्मत बोल रही। डिनायर का कहाँ हुआ? डिनायर का कहाँ हुआ था? बंगाली बाबा कैसे बताऊँ। आमी छे तुम्हार। अच्छा हाँ, गेट भी तो है इस बार। गेट की डेट क्या है? एग्ज़ाम डेट क्या है गेट की? गेट 2024 एग्ज़ाम डेट। अरे 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 अरे, ये तो आ ही गई। 3 4 10 11। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखते हैं क्या लगता है, हो पाएगा डिनर का? पोल डालो मैं एंकर यहाँ पे। क्या डिनर गेट निकाल पाएगा? डिनर डिनर। अरे भाई, अरे निकाल सकते, लेकिन उसके पास कम टाइम था भाई तैयारी करने का, अगर उसने इस कम टाइम में निकाल लिया तो उफ, क्या ही बोले भाई। अरे मुझे तो ये इसका कुछ पता भी नहीं है, कैसे होता है, कैसे होता है ये। क्वेश्चन व्यूअर चैनल में गए, स्टार्ट अ पोल। क्या डिनायर गेट निकाल पाएगा? क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट पोल। नो, वेरी रियलिस्टिक। जा मीमर को बोल क्या कि वो करो, पोल करो।
दिख रहा है क्या पोला ये भी? ये कि मैंने शायद हटा दिया गलती से। है ठीक है। The topic is graph coloring problem. This can be solved using backtracking. First of all, let us know what the problem is. See, a graph is given and some colors are given. Let us say 3 colors are given, that is red, green and blue. Now the problem is we have to color the vertices of a graph such that no two neighboring vertices or adjacent vertices must have same color. So 3 colors are given to me. Let us try and see what colors we can give, whether it is possible or not possible. So I'll start from vertex 1. I'll give red color to this one. Now I'll pick up second vertex 2, who are neighboring to 2, 1 and 3, but already red color is there to this neighboring vertex, so this 2 cannot take red color. So okay, we'll give green color. Now go to vertex 3. Which color I can give? Can I give red color? It's not adjacent to 1. Yes, I can take red color. Then vertex 4. Can I give red color? This is adjacent to this one. No. Can I give green color? So is it adjacent? Is it adjacent? No. I can take this color. Then here, can I give और भाई उमर क्या हाल है? red color? No, this is adjacent to this one. Can I give green color? This is adjacent to this, so I cannot take green color. Can I take blue color? Yes, this is not green, this is not, so it's different from all 3, so I can take blue color. So I have vertices 1, 2, 3, 4 and 5, and the colors what I have now is red, green and blue. Yes, a graph can be colored like this. Is it the only solution or there are other solutions possible? Yes, I can color it in a different way also. Let us see, instead of red color, there's a different possible solution. Go or not. We don't want the colors. We don't want the colors of the vertices. Just we want to know it can be colored or not. So this problem is called as M coloring. We'll define one more problem here. If a graph is given and we want to know minimum how many colors required for coloring the graph. And this problem is called as M coloring optimization problem. M coloring optimization problem. Now you can say there are 3 types of problems. One is if a graph is given and the colors are given, we want to know in how many ways the vertices can be colored, what are the possible colors. This is one type of problem. Second thing is the colors are given, just we want to know whether the graph can be colored with those vertices or not. And the third thing is colors are not given, just we want to know minimum how many colors are required for coloring this graph. So before start coloring, first of all we need to know minimum how many colors we should have. So for that we go for optimization problem, right? Or else we already have some colors and we want to know whether these colors will be sufficient to color this graph or not. So then this is and show you such that no 2 adjacent vertices are having same color. So this problem can be solved using backtracking, and the method of solving any conditions or any checking, I will simply generate a state space tree. So let us take this is the root vertex. Then first I will consider the first vertex 1. So this is for vertex 1. So I can call it as x1. So for this I can give either red color or green color or blue. Third vertex I can color them without. Let us check total how many nodes are generated. That is root is having first node, then first level is having 3 nodes, the second level is having 3 into 3 nodes, then third level is having 3 into 3 into 3 nodes, that is 27 nodes, 3 into 3 into 3, 27, and the next level is having 3 into 3 into 3 into 3 nodes. See, these many nodes are generated with plus 1 minus 1 by 3 minus 1. So this is 3 power 4 plus 1 minus 1 by 2. So this is approximately 3 power n plus 1. N is the number of vertices. And what is 3 here? C to the power of n plus 1. So the time complexity for generating these nodes, time is nothing but the number of nodes you are generating. For each node you consider this 1 unit of time. So total time span is 3 power n or C power n. So this is exponential time taking problem. Now let me solve it using backtracking. So we imagine that all these nodes are generated, but backtracking will reduce it. So still we consider the time is this much only. I will solve this using backtracking by also checking bonding function. Let us start. I'll generate a state space tree. Now this is the first vertex 1. I'm calling it as x1. So for this I can give it red color. Then 1 second.
Next vertex is x2. Now once for vertex 1 has red color, can I give red color to this one? No, they are adjacent, so red color cannot be given. So if I use red color, then this node is killed by bounding function, so this is killed. Now I can give another color. Let us take a green color here. So yes, green color is allowed. So I'll take a green color here. So the next vertex is green color. See, for the second vertex, color is green. Yes, this is valid. Now once you got a valid color, go to the next vertex, that is third vertex. So to the third vertex, can I give red color? Check it here. Yes, this is not adjacent to 1, it's adjacent to 2, and they are having different color. Yes, this is allowed. Now once I got a valid color, I'll move to next vertex, that is vertex 4. So let us check first, can I give red color? So here, red color, no red color, this is adjacent to 2, so it cannot be given. So this node is killed by bounding function. Let me try next color, that is green. Can I give green color? Yes, it can be given, and this is different from these two. Yes, the green color can be given. Now, see, it is like depth first search. We are at this stage. So now next I should try another color also, that is blue color. Can I give blue color to this one? Yes, I can give blue color also. So these are two solutions. See, red, and green, blue. Green also and blue also. So I have two solutions like this. First solution is red, and green. Second solution is red, green, and red, blue. So I have tried all possible colors for fourth vertex. Go back and try the next color for third vertex. Red is given. Now green. So I'll remove fourth vertex and here I'll mention green color. Can it be given? No. These are adjacent, so color cannot be given. So this is killed with a bounding function. Now can I give blue color to this one? Let me try. Blue color. Yes, blue color can be given. The bounding function. Vertex green or killed. To be 3 power n. So if we say let us take unique color for each region, throw in the cost of. If I take this graph 1, 2, 3, 4, and 5, then precaution. I'm going to try out coloring. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So today we will be solving the problem M coloring of a graph. Yes, and this is from the SSD sheet. So what does the problem states? The problem states that you'll be given an undirected graph, yes, and an integer M. Now your task will be to determine if the graph can be colored with at max M colors. Now that is the question. And whenever you're coloring the graph with M colors, you just need to make sure that none of the two adjacent vertices or nodes of the graphs are colored with the same color. Now, if you have seen my graph series, you would have seen the bipartite graph video. Over there, the question was, instead of M colors, it was 2 colors. So over here, we will be checking if the graph can be colored with M colors or not, right? So if it is possible, you just need to return a 1. And if it is not possible, you need to return a 0. That is a simple enough question. Now let's understand this question with the help of this graph. So imagine this is the graph, and I'm asking you, can this graph be colored with the help of 3 colors? And your answer will be, yes, definitely. Why? Because let's imagine I say that I'm going to color 1 for this node, and I decide that I'm going to color 2 for this node, okay? And after that, I decide that I'm going to color 3 for this node, okay? After that, what if I decide that I color 2 for this? So if I try out coloring in this fashion, you see that none of the adjacent nodes, like for 0, the adjacent node is 3, for 0, the adjacent node is 2, for 0, the adjacent node is 1. None of them are having the same color. That is what the question stated. You need to make sure that the graph can be colored using at maximum of 3 colors. It's not an compulsion that you have to use 3 colors. It's just the maximum number of colors that you can use. So over here I can see with the help of 3 colors, I was able to color. But what if I take M equal to 2? Can I color it? Let's see. Imagine I color this with 1 and I decide to color this with 2. Definitely can I color this with 1? No. Why? Because this and this guy are adjacent, and you can see that both adjacents are having colors 1. So definitely not. Can you color it with color 2? Again, no, because this and this are adjacent and they're having the color 2, same color. So using at maximum 2 colors, I will not be able to color this graph. So that is the simple question. Given M, you just need to tell us if you can color the graph with M colors or not. If you can, just return a yes. If you cannot, just return a false. That's the question. Projects. A lot of you actually struggle to find ideas about projects, isn't it? So what if I tell you an academy and coach chef are bringing up an initiative where they will be actually this and color this with at max M colors. So why don't I try every possible way? And you know that if I am going to try every possible way, the best way to implement that is using recursion. So why don't I do that? So the recursion thinking should start in a way that I will try every color on every node. Think in this way. Try every color on every node. Since I have 4 nodes, these are 0 based indexing. So imagine I start up with the node 0. And what does recursion means? Tries every possible way, right? So what is the possibility of coloring this node 0? So you might be like, hey Trevor, why don't we color this with the color 1? I agree. Why don't you color that with color 1? So assume I color that with color 1. Now you might say, hey Trevor, why don't you color that with color 2? I agree. Yes, we can. Now you again might say, why don't you color that with color 3? I'm agreeing to every step that you're saying, because we can definitely start coloring it with color 1, 2, or 3.
because we are trying recursion. Recursion means try every possible combo. So in recursion, the first step that we will do is we will start coloring that with color 1. So why don't you color that with color 1? Okay, so just start with color 1. And if this is successful, if I start with color 1 and that comes out to be successful, so there's no need to try out other colors. This is the possible answer. Now, since I've colored the node 0, now instead of traversing on the graph, we know there are 4 nodes. Let's travel the 4 nodes individually. So what is the next node number wise? It's 1. So go to the node 1. Now I ask you a simple question. Which color can you color the node 1? So you're currently at 1, right? Now you might try out with 1 because whenever you're writing recursion, it tries every color. Now when you try out with 1, you see you can definitely not color that with 1. Why? Because the adjacent node of 1, that is 0, is having the color 1. So this is not possible. So when you tried coloring with 1, that's not possible. So what you decide is, okay, let's try with the other color. Can I color that with color 2? And you see that if you try coloring it with color 2, that's actually possible. Yes, that's actually possible. And if it is possible, I know there's one more color, color 3. But let's not try that as of now. Let's try out the next node.
हेलो, आ गए हैं हम, आ गए। हाँ, क्या करना था हमें? करो, एक नया बनाओ, उसके अंदर लिखो लेवल ऑर्डर। नहीं बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। वो चल रहा है क्या अभी? हाय हाय, मैप पिक है किसी का? इसका मैप पिक है। रेवेनेंट अपने मैप पिक में हार गई। शी, भूख आ रहा है रॉसी। दूसरा किसका है? कार्निवल गेमिंग और ट्रू रिपोर्ट्स का है। वो होगा ना देखने लायक है, तो ये तो भूख आ रहे हैं उनको। ठीक ठीक। हाँ, क्या था ये? तो ये था, यहाँ से लिखना शुरू किया था ना, तो पहले तो हम वही करेंगे अपना लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। खाना खा लेते हैं यार, गर्म हो रहा है। क्या था हमारा क्वेश्चन में? ये क्या है, इसको नहीं हटाओ। ट्री नोट कॉपी कर लो यहाँ से। कहाँ है? ठीक है, क्वेश्चन जाता हमारा ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसमें हमें मारना है ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स मारने के लिए पहले हम वेक्टर ऑफ वेक्टर बना देंगे एक रेज नाम का, फिर एक क्यूब बना लो। तो हमने एक क्यूब बना लिया, ट्री नोड, और नाम दे दिया क्यूब। इस क्यूब में हम पहला एलिमेंट पुश कर देंगे अपना। ठीक है, हाँ, खाना खा लेते हैं एक बाइट।
जब हमने पहला एलिमेंट हमने पुश कर दिया, उसके बाद हमने एक अरे बेस कंडीशन तो लिखी नहीं। इफ हमारा जो रूट है अगर वो नल हुआ तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे रेज को, ठीक है। इसके अंदर हमने रूट डाल दिया अपने क्यू के अंदर, ठीक। फिर हमने चेक किया अगर हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है, इफ आवर क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, तो हम क्यू का साइज़ निकाल लेंगे, ठीक है। क्यू का हमने साइज़ निकाल लिया। फिर हमने एक वेक्टर ले लिया जो लेवल वाइज आपके एलिमेंट्स को डालता रहेगा, तो हमने इसका नाम रख दिया लेवल, ठीक। हमने लूप दौड़ाया इसमें फ्रॉम आई इंटू 0 से लेकर साइज तक चलेगा लूप, प्लस प्लस होता रहेगा। और इसमें से ठीक। तो हमने इसका पहला एलिमेंट उठा लिया, ट्री नोड, और इसको कर दिया पॉप। पहला एलिमेंट को उठा के कर दिया पॉप और उसका चेक किया फिर उसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर उस एलिमेंट के, अगर उस लेफ्ट एलिमेंट मतलब अगर हमारा नोड के लेफ्ट में कुछ है, नल नहीं है वो, तो हम डायरेक्ट उसके अंदर पुश कर देंगे। रूट को लिखा हुआ है, रूट के लेफ्ट में पुश कर दिया। फिर हम चेक करेंगे राइट सब ट्री के लिए, अगर नल नहीं है तो रूट के राइट सब ट्री में पुश कर दिया, पुश बैक नहीं पुश, ठीक है। लेफ्ट ने पुश कर दिया। अब जो हमने वेक्टर बनाया था लेवल, उसके अंदर डाल दिए हमने अपने वैल्यू, जो तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, नोड की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, नोड की वैल्यू, ठीक है। फिर हम इस लेवल जो आया लेवल को हम पुश कर देंगे अपने रिजल्टेंट वेक्टर में, क्योंकि फिर लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रेस्ट। ये हो गया हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर नहीं सर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब बात ये है इसका मेन बनाना नहीं आता, मेन तो बना रखा है, लेकिन ये जो क्लास सॉल्यूशन दे रखा है इसने हमें, ठीक है। लीड कोड में हमने जो क्वेश्चन किया था इसमें क्लास सॉल्यूशन दे रखा था और ये सारा पब्लिक के अंदर आ रखा था ना, मतलब ऐसे दे रखा था उन लोगों ने क्लास सॉल्यूशन और ये सब पब्लिक के अंदर था, ठीक है। ऐसे था, ऐसे लिखा हुआ था ये। तो हमें पहले इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना, ऐसे तो होता है कि इंस्टेंस क्रिएट करो पहले इसका, कहीं पता इंटरव्यू देता है उसमें बोल दिया लिख। तो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे हम, मेन मुद्दा है वो। बाइट ले लेते हैं खाने की, इंस्टेंस बना देते हैं इसका। स्मॉल इंस्टेंस बना दिया, कॉल कर देंगे भाई यार, ठीक है।
हम कॉल कर देंगे वेक्टर ऑफ वेक्टर ना जो था res इक्वल्स टू सॉल्यूशन। फंक्शन का नाम भी था क्या कुछ? लेवल ऑर्डर। कॉपी करो, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमने वैल्यू डाल रखी थी रूट की, राइट। इसको प्रिंट करने के लिए हमें इसमें लूप जोड़ाना पड़ेगा। यहीं से उठा रहा ना, कहाँ है ये? ये कॉपी करो, कहाँ है ये? पेस्ट, रिटर्न 0। ऐसा ही होगा शायद। ट्री बनाना है क्या बैठ के अब? U. अब क्या error है? was not declared in the scope.
उसने बोला उसके में 2 डेट थी, एक थी रिपोर्टिंग डेट कि तुम्हें वहाँ पे पहुँचना है और एक थी ज्वाइनिंग डेट। तो मतलब जब से तुम ऑफिस जाना शुरू करोगे। तो वो बोल रहा था जो रिपोर्टिंग डेट होती है मतलब जो ज्वाइनिंग डेट होती है उससे एक दिन पहले एंट्री मिल जाएगी। तो तेरी ज्वाइनिंग डेट 12 तारीख की है, उससे एक दिन पहले मतलब 11 तारीख को तुझे एंट्री मिल जाएगी। The next node in the serial wise. So the next node is node 2. Okay, so I go to node 2. Now, when I go to node 2, the first color that I will try is, because I'm trying every color, let's try out color 1 and let's check out canine. So when you try color 1, you see that 2 has an adjacent node 0, 2 has an adjacent node 1. So you can definitely not color with color 1. So color 1 is not a possibility. Now you decide, can you color that with color 2? So when you try that with color 2, let's see what happens. If you try that with color 2, it checks for its adjacent. 0 is the adjacent, it's having a color 1. Okay, fine. 1 is its adjacent, it's having a color 2. That's not fine. That means you cannot color with color 2. So that means we're left out with the next color, that is color 3. Let's see if we can. Let's see if we can. So if I try to color this with color 3, can we? What are the adjacent nodes? 0, it's having a color 1, which is not 3. The other adjacent node is 1, which is having the color 2, which is not 3. So I can color with color 3. That's a practical possibility. And if it is in the serial wise, I move to the next node. Yes, we're going to move in serial wise. So when I move to the next node, I see that the next node is node 3. So again, I'm going to try out with color 1. Yes, I'm going to try out with color 1. So let's try out with color 1. So when I try out with color 1, I see it is not possible. Why? Because the adjacent node is also having a color 1. So coloring it with color 1 is definitely not possible. Can you color that with color 2? Let's check that out. I can definitely not, because the adjacent node is 1 and we cannot. So color 2 is also not possible. Can you color it with color 3? So I will be like, yes, you can. So since I can, I try to color that with color 3. And after that, I move to the next serial number node, that is node 4. Now at this moment, we see that the number of nodes were 4 and you reach the serial number 4. And whenever you reach the serial number 4, that means, why did you reach here?
because every node you are successfully able to color with some color, right? You are successfully able to color it with some color. That is why you reach the last serial node, that is 4. Hence, I can say I was able to. So thereby you can return a true. Why true? I'm going to tell you. Over here, F3, which called F4, says you give me a 2. So I'm going to return a 2. F2, which called F3, returns a 2. Now, do you remember on F1 you tried with color 2? So since you're trying every color, there could have been a possibility of coloring that with color 3, and you could have got one more possible solution. You might have got one more possible solution. But the question stated, can we? The question stated, can we? So is there a need of actually trying out a color 3 on the node 1? No. That's why returning a true is very important. So that if you got an answer by coloring with a particular color, you definitely colored with M colors. So how will the pseudocode look like? So can I say, if I filled up every node, I will definitely reach the node N. And what am I trying? I'm trying to color that, right? With what colors? From 1 to M is what I'm trying. Now when will I color? You just saw, right? If it is possible to color that node, if it is possible to color, right? If it is possible to color that node, then I will color it. Probably you can maintain some color array, and you can say that the node color will be this call, right? This color. And after that, what did you do? You did call the function for the next node, next serial number node, so let's call it. And if this function returned a true, then did you try out the other color? Did you? No, you did not. So what you check is, if this function call returns a true, there's absolutely no need to go back to this for loop. You can break out by saying return true. And if it doesn't returns true, then you have to do the backtrack step. That means whatever color you did, please make sure you remove that color, because in the next step, let's imagine, just for an example, कुल मिला के बात यह है कि 11 तारीख को तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कोई भी जा सकती है वहाँ पे। Just for an example, imagine this. When you tried with color 2, this guy did not give you an answer. And if this guy did not give you an answer, then you need to try with color 3, right? And since you need to try with color 3, that means you colored with color 2. So that has to be taken off, right? So that's why you take it off. So this is how the if statement will look like. And once the for is over, so just imagine once the for is over, can I say this? I tried with every color from 1 to M, and the return true never got executed. And if it never got executed, can I say it was not possible to color this particular node with any of the colors 1 to M? And if it is not possible, I can definitely not color the graph. So if you reach this line, and you're going to return a false saying it's not possible to color this graph. Simple as that, because I tried everything and I never got it true. It was never possible to color the graph with any color 1 at first. Now you go to f of 1, and the next function, see, it colors this, and next it calls this function f of 2. That's the next node in serial.
f of 2 goes and tries with color 1. Can it color with color 1? Let's see. Can it? No, it cannot. You can see the adjacent nodes are having same color. So color 1 is not possible. For loop now goes to color 2. Color 2 is possible? No, not possible. So can I say I actually tried every color from 1 to m? Not succeeded. So again return of false happens. So the false will happen, right? So again the false will not be possible. Where he got a false. Now, when he tried, there's no other way, right? To the power m. Complexity will be n to the power m because you're trying m colors that you can at maximum use. So at first what I do is I all the cases it is just, and if you don't know how to store a graph m because you're trying m colors at every node. So now it's time to discuss the C++ as well as the Java solution to this problem. So let's check out the Java representation recursive function nodes is if it is in a graph video so that you have a key combinations return you would true, you can definitely return a false over here, and this is how the code for Java will look like. So we're going to discuss the C++ solution, but if you don't know how to store a graph, you can definitely watch my C++ representation in a graph video so that you have a fair bit of idea how to store a graph. Okay, so I'm assuming you know how to store a graph. So what they've given you is the graph, and m, which is the number of colors that you can use at maximum to color a graph, and intn, yes, which is the number of nodes. So what I do is I assign a color array and I make sure that it is completely assigned with 0. That means none of the nodes are colored. And what I do is I start with the starting node, assuming that this is 0 based indexing. I start with the node 0 and I pass on all the other parameters that are required. And this is basically the recursive function f of 0. And if this recursive function returns a true, I'm going to return a true. That means it's possible, or else I'm going to return a false. Now let's check out the recursive function. What about the recursive function? I have this recursive function. Takes the node and takes all the other parameters that will be required. I initially made sure the base case was if I've colored all the n nodes, I'm going to return a true. Or else I'm going to try every color from 1 to m. And I'm going to write this ssafe function. I'll explain you the ssafe function afterwards, but assume it's an ssafe function which tells you true if it is possible to color it with that color. That means none of the adjacent nodes have the same color. Then I color it with color I, and I call the recursive function again for the next node, that is node plus 1. And if this returns a true, I return a true. Or else if this doesn't return a true, I made sure that whatever color I did, I just take off that color. That's backtracking. I take off that color. And if I've tried out every color from 1 to m, yes, if I've tried out every color from 1 to m, and I find that it is not possible, yes, I find that it is not possible to color it with any of the m colors, I'm going to return a false. That's how the recursive code will look like. But now, what about the issafe code? How is that issafe code going to look like? So what I can say is the issafe code is going to look like something like this. Issafe takes the node and takes the graph, takes the color, and takes the color that I'm trying to do that node. Takes the color that I'm trying to do that node, right? So what I do is I traverse for all its adjacent nodes. That's from 0 to n in the matrix, and I see that if it is not this node itself, and what I do is I basically check a graph of k node, basically the adjacent. If that is 1, that means there is an edge. That means it's an adjacent node. So if it is an adjacent node and the color is equivalent to the color that I'm trying to do, that means it's not possible because the adjacent node k is having a color that I am trying to do. So why don't you return a false? So it will return a false. And if none of the adjacent node was
306 418 पे आ गया सा। ब्लिट्स ब्लिट्स Let's go. Ah. Rematch. That's it. Bye.
आया समुद्र दरवाजा खोलना।
हैं? आई तो थी।